Good morning, students. Previous class re I have taught you about for positive integral index of De Moivre's theorem. Now we will discuss about for positive integers of De Moivre's theorem and the fraction. N is a fraction. The statement is, if let n be a negative integer, then prove that cos theta plus I sin theta whole to the power n equal to cos of minus n theta plus sin of minus n theta equal to cos n theta minus I sin n theta. Okay. Step 1. कौन करिया n equal to आमे 1 नवा, we have to put n equal to 1. Then LHS, then we are putting the value of n 1 cos theta plus I sin theta whole to the minus 1. We can solve this cos theta minus I sin theta. Now RHS, n, the value of n, we can put this as 1, that is cos theta minus I sin theta. Again LHS equal to RHS. The second step is assume that if n equal to k, then p of k equal to cos theta plus I sin theta whole to the minus 1 equal to cos k theta minus I sin k theta. Previous class I have told you that cos of minus theta is equal to cos theta, cos of sin of minus theta is equal to minus sin theta. For that basis, here cos of minus k theta plus I sin minus k theta. The answer is cos of k theta minus I sin k theta. Okay. Now n equal to k plus 1. Hence, we must show that pk plus 1 hoji cos theta plus I sin theta to the power minus of k plus 1. Why minus of k plus 1? Because we are putting the value of a. आमे कौन करुचे n रो value टाको put करुचे. What will be the RHS? The RHS will be cos minus of k plus 1 into theta plus I sin minus of k plus 1 into. Now the term is LHS. LHS cos theta plus I sin theta whole to the power minus of k plus 1. Now we have to convert it as a positive. 1 by cos theta plus sin theta to the power k plus 1. आम समस्त जानी मुझे अलरेडी तुमको कही एटा इनवर्स फॉर्मूला हो जाउची 1 by x टा होउची x इनवर्स. Already I have taught you this. Now एटा को आम एबे स्प्लिट कर दबा. Now we have to split this 1 by cos theta plus I sin theta whole to the power k into cos theta plus I sin theta. This is the result. Already we got the result in the case 1. n is a positive integer. Case 1 रे हमें already यही result टा पाई थिले, तो सेटा को मु खाली डायरेक्ट लिखि देइछि, किंतु तुमे माने छुआ खाता दे पूरा कंप्लीटली करी की लिखिबो. क्लियर समस्ते भलसे मु कहि दोछि आउ थेरे. Everyone has to completely do this is as per the method of step 1 or case 1. Okay, completely solve this as per the method what we have written in the case 1. Okay, and now we got this the result. The next step is cos k plus 1 into theta plus sin k plus 1 into theta to the power minus 1. Here we putting the De Moivre's theorem, cos minus of k plus 1 theta plus sin minus of k plus 1 theta. LHS equal to RHS. Okay. Here P1 is true,
by the method of induction pk is true and pk plus 1 is true, so that pn is true for all negative integers. Okay, ठीक अच्छे छुआ मैंने आर छुआ मैंने गोटे गोटे अल्टरनेटिव मेथड अच्छी. This problem has a alternative method. Okay, this problem has a alternative method. What is that method? The method is like this. Alternative method. Okay, let n be a negative integer. Let n equal to minus k, where k is the positive integer. K is a positive integer, and when negative is multiplied with this, जब negative 10 multiply हुए positive integer, the answer is negative. तो से जिससे हम कर let n equal to minus k, where k is a positive integer. Now cos theta plus I sin theta whole to the power n equal to putting the value of n. आम n रो वैल्यू पुट करिया. पुटिंग द वैल्यू ऑफ n cos theta plus I sin theta whole to the power minus k. Again this is the inverse method. Now it have three inverse method. So 1 by cos theta plus I sin theta whole to the power k. Now we solve this as the De Moivre's theorem, formula of De Moivre's theorem, 1 by cos k theta plus I sin k theta. Now this is the main thing we have done here. The thing is, here I multiply the conjugate both the numerator and denominator. एठी मु कौन करुची conjugate multiply करुची लबरे भी हररे भी. क्लियर छुआ माने conjugate मु multiply करी सारला परे एठी कौन पाइली. Now I have got that the denominator part is getting the square. Denominator part is getting the square. As we know I square is equal to minus 1. So here we put the value of I square, then it becomes positive. Okay. Now we know that from the trigonometry cos square theta plus sin square theta equal to 1. Okay, and this is the formula, cos square theta plus sin square theta. Here we got that 1. Okay, तो cos k theta minus तामे कौन पाइले एठू जदि एमे पुट कर दे तामे कौन पाइले तो 1 पाई गले तो cos k theta minus I sin k theta. तो हमर एठू कौन हैला देखो पुणी एटा को मु सॉल्व कर देली को मेथड रे. देखो cos of minus theta is equal to cos theta, sin of minus theta होची sin, minus sin theta मु तमनु कहि समस्त को बारंबार कहि जिंसरा. तो ए जिंसरा मु एठ लिखि देली आउथरे cos of minus k theta plus I sin minus k theta. जोटा होची cos of minus k theta होची cos theta, I sin of minus k theta तो minus sin theta, तो एटा होची minus sin theta. क्लियर हे गेला. तो वर्तमान मु minus k जगह रे काहर वैल्यू पुट कर दे परिबी. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ minus k? आम ऑलरेडी नहीं लेट n इक्वल टू माइनस के, तो सही जगह रे मु कौन पुट कर देली मु n रो वैल्यू पुट कर देली. ओके हे गेला. ठीक अछि छुआ माने बर्तमान फ्रैक्शन टा भी खाली सेमती मु जस्ट फ्रैक्शन कहि दउजी तुम मानकु, किंतु फ्रैक्शन टा एते तुमरो किछि दरकार नाही. मु ऑलरेडी खाली जस्ट नॉर्मल तुम कहि दउजी. लेट n be a fraction. Let n equal to p by q, where p is an integer and q is a positive integer. Always q is a positive integer. Okay, q is a positive integer. Okay, whole to the power n equal to cos theta plus I sin theta whole to the power p by q. And cos p by q theta plus I sin p by q theta. Okay,
एतिकी होची आ जिनसटा फ्रैक्शन रो बेसी किछि नाही फ्रैक्शन तुम एतिकी जानी थाओ फ्रैक्शन रो अधिक किछि आको रिलेट करिके जिनस नाही बाकी यार नोट्स टा मु तुमको जहाँ करेली तुम मानक पठेई देबी नेगेटिव इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस both notes I have sent to you okay and किछि असाइनमेंट मु देई देबी तुम मानकू करिवा पई किछि असाइनमेंट तुम मानकू पठेई देबी या परे ऑलमोस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर हमरो सरी आसला लास्ट गोटे पार्ट पढ़िबा क्वाड्रेटिक इक्वेशन छुआ जोटा कि कॉम्प्लेक्स नंबर किछि अछि हला क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्टटा अछि तो बाकी सेही पार्टटा खाली जहा रहिला सेही पार्टटा मु तुम मानकू खाली नेक्स्ट क्लास में करदेले हमर कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलरेडी कंप्लीट हो ठीक अच्छे छुआ मैंने थैंक यू।